JEE Main. Today we are going to discuss the 29th January, the shift 2 or the evening shift. The paper is moderate and simple, a formula based. And one, you can say the drawback of this paper is like from given chapter 2 questions like that we have the from like a capacitor, ray optics, units and dimensions, then electromagnetic effects of current. Two questions are. It's a very rare, like I don't know NTA. यहाँ पे like हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए. Like this will be disadvantage for those students who have prepared all chapters और जो by accidentally ये 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए 8 questions advantage है. Okay, fine. We can't do anything, but as a teacher, like जो भी मैं observed it, I'm just sharing it. So we'll discuss the paper. So we'll get the exact picture. I'll start the paper. JEE Main bacho, like we are going to do the paper discussion for the JEE Mains 2025, 29th shift to the evening shift. Like मैं आपका Sridhar sir, physics teacher. Okay, now the paper is moderate. Paper is moderate and formula based. बल्कि यहाँ 2-3 क्वेश्चन टफ है बट स्टिल मैनेजेबल है. एंड टोटल पेपर अगर आपको अराउंड 176 marks will be for 99 percentile. Total, this is about the total. Consider this will be like a moderate paper. So we'll start the question discussion. A particle of same mass are performing SHM vertical with two different spring constants K1 and K2. Amplitude of both is same. Find the ratio of maximum speed of particle. Spring constant यहाँ पे omega 1 equal to K1 by M, omega 2 equal to K2 by M. यहाँ पे हम ऐसे सब सस्पेंड कर रहे हैं. सेम पार्टिकल को दूसरा वाला और एक पार्टिकल उसका मास सेम है विथ स्प्रिंग K2 will suspend. So what is the maximum speed? इसका maximum speed V1 होगा, V2 होगा. What is the formula for V1? V1 to amplitude of both is same. Omega 1, V2 equal to A omega 2. इसका रेशियो पूछ रहे हैं V1, V2. ये तो omega 1 by omega 2. Omega 1 angular frequency. Angular frequency depends upon spring constant and the mass, independent of amplitude. इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. K2 by M root of K1 K2. So this question is based on the oscillations or simple harmonic motion. Okay, fine. So बल्कि questions very easy. जो definitions आपको याद है, so with that you can manage. The angular frequency or time period of oscillation depends only on mass and spring constant. ये तो एक फॉर्मूला हुआ. और बाद में maximum speed at mean position v equal to omega. I think इससे आपको एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं. अगर आपको ये जो मैं ग्रीन में हाईलाइट किया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला एंड मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला, ये दोनों चाहिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. दिस इज बेस्ड ऑन ऑसिलेशन. ओके सर, लाइक व्हाट इज द like कैसे फॉर्मूला कैसे याद करना है? फॉर्मूला कैसे याद करना है? लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग. ये दोनों दो अलग है. अगर तुम टॉपिक को समझ चुके हो फिर भी भूल जाते हो, there's a human tendency. दो आप टॉपिक को तुम अच्छे तरह से लगे समझ चुके हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर भी व्हाट हैपन, तुम भूल जाते हो. द रीजन फॉर दैट, it is a memory. Memory comes by practice.
अंडरस्टैंडिंग कम फ्रॉम थिंकिंग एबिलिटी, दोनों अलग है। यहाँ पे जेई मीन्स के लिए हमें क्या चाहिए, लेके वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड वी हैव टू रिमेम्बर। रिमेम्बरिंग के लिए यू हैव टू रिपीट थिंग्स, रिवाइज, जिसके लिए थिंकिंग एबिलिटी। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं लेके जेई मीन्स इजी एग्जाम। नो, जब आप पेपर सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा। एडवाइस देने वाले बहुत सारे देते हैं, ग्राउंड रियलिटी में जब आप पेपर ले लो, सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ के वो लैंग्वेज इंटरप्रेट करके, कॉन्सेप्ट्स रिकलेक्शन, अप्लाई देम, रिकलेक्ट फॉर्मूला, सॉल्व इट, क्लिक द ऑप्शन एंड ये सब 1 आवर में। नॉट जोक। मैं कितना इजी तो सभी को रैंक करता था। तो इसके लिए कांस्टेंट थिंकिंग, लेके डेली 2-3 आवर्स अगर आप पढ़ोगे, देन every day some keep some 10 or 15 minutes for the formula recollection. जब आप करोगे तो then you will be in a stable position. These are the methods. Why I'm giving this advice, अब तो जनवरी सेशन तो कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। दे आर सेंडिंग मी सर, लाइक क्या करूँ सर, मेरा स्कोर लो है। सो आई आस्क देम लाइक ओके, कितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है? ओके सर, सभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, मगर एग्जाम में याद नहीं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहने से एग्जाम में याद रहना इट्स नॉट ए कंपल्सरी। याद रहने के लिए उसे दोबारा पढ़ना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट, रिमेम्बरिंग इज डिफरेंट। अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम थिंकिंग एबिलिटी, रिमेम्बरिंग कम्स फ्रॉम डूइंग नंबर ऑफ रिविजन्स। इसको हम हार्ड वर्क कहते हैं, रिमेम्बरिंग को। तो जो भी आप अप्रैल सेशन में फिर से दोबारा आप देंगे, not only start reading it again and again. ज्यादा बार पढ़ो, जब तक आप 2-3-4 बार पढ़ोगे, फॉर्मूलास डेली रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिकली द फॉर्मूलास विल बिकम मेमोरी। बेस्ट एग्जांपल, नेशनल एंथम, जन गण मन, जन गण मन अधिनायक। कॉन्सेप्चुअली आर वी गुड? उसका डेप्थ क्या है पता नहीं, फिर भी हम वी टेल वेरी लिटरली नो। जब भी किसी को नेशनल एंथम गाओ बोले तो ओके, अपना राष्ट्रगीत गाओ बोले तो हम गाते हैं ना। ओके, अब तो थोड़ा नॉलेज है, ओके व्हाट इज जनगण मन, दैट वन। जब आप स्कूल में रहे तो उसका कॉन्सेप्ट याद है, जनगण मन। फिर भी आप याद कर रहे हो, द रीजन इज मेमोराइजेशन। So what is the method is the memorization is come by repetition, not by understanding. Okay, I think you got my point here. इसके लिए हार्ड वर्क चाहिए, डेली और टू रिवाइज फॉर्मूलास ट्राई करो, so that at least if you try now, after 1 month you'll be on safer side. At least every April you'll be ready. Okay, next question, अगला वाला। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका यूनिट पूछ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का तो डेफिनेशन, फ्लक्स इक्वल टू बी बार डॉट एस बार। इसका यूनिट, ऐसा यूनिट वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा यूनिट, विल टेक इट एज वेबर। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट एम बार इक्वल टू करंट इनटू एरिया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ। सॉरी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहाँ पे आता है तुम्हें? बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और इसको एच बोलते हैं ना, तो एच इक्वल टू एन आई। सो ये तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। तो इसका यूनिट कितना हुआ? एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटिक मटेरियल कॉन्सेप्ट का, इट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, दिस वन। नेक्स्ट, बाद में मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, और ये भी यूनिट यूज करते हैं हम, गॉस। व्हाट इज 1 × 10⁻⁻⁴ गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला।
ओके, नॉट नीडेड, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके, ये तो कंप्लीट मैग्नेटिज्म के बारे में पूछ रहे हैं। सो दिस बेस्ड ऑन द व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको एच एच को या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड लाइक एच। वेरी गुड क्वेश्चन। जस्ट आस्क्ड अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस एंड सभी कंफ्यूजन है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स। Really asked very simple way and beautiful way. Next question. Two planets A and B are revolving around a massive star such that RA equal to RB and MA. Find the ratio of angular momentum. यहाँ पे एक स्टार रिवॉल्व हो रहा है। यहाँ पे एक स्टार रिवॉल्व हो रहा है। RA RB। रेशियो इसका ऑर्बिटल स्पीड कितना होगा? VA VB। RA इक्वल टू RB, RB इक्वल टू ए वाला तो RA हुआ। दिस विल बी RB। डायग्राम जरूरी नहीं, सो तुम लोगों को समझ, टू मेक यू अंडरस्टैंड यहाँ पे डायग्राम डाल रहा हूं मैं। देन व्हाट इज द VA, that one? What is the angular momentum? Angular momentum equal to MA VA RA. Find the ratio of angular momentum. Orbital speed, orbital speed formula क्या है? लगे GM RA into RA. This is orbital speed. तो इसको हम MA, mass of the star is M. So angular momentum of planet A, angular momentum of planet B, MB VB RB, MB। इसका रेशियो ले लेंगे। देन this will be MA by MB, RA by RB. Mass ratio MA by MB 4√3, ratio of RA by RB ये तो √2 हुआ। So this will become 4√6. LB by LB by LA होगा 1 by 4√6. And the topic is gravitation and satellite, time period of satellite, angular momentum of satellite, energy of satellite, जो भी फॉर्मूलास है अगर आपको याद रहे तो दिस विल बी वेरी इजी। ये तो आपको पता होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट, अबाउट सन और एनीथिंग, MVR फॉर्मूला। Problem very simple again. Next one. On increasing the pressure, the volume decreases is more in an isothermal process than in an adiabatic process. Adiabatic process is given by. This problem is based on the thermodynamics chapter. Basic definitions के बारे में पूछ रहे हैं। Adiabatic process में तो this is the basic definition. PV to power of gamma should be equal to constant. I think this is a statement. Reason is true. On increasing pressure, volume decreases is more in an isothermal process than in an adiabatic process. Increasing pressure, PV यहाँ पे ग्राफ डाल देंगे। On increasing the pressure, और P1 V1
equal to P2 V2, P1 V1 gamma equal to P2 V2 gamma, V2 equal to P1 V1 by P2, V2 is equal to P1 by P2 gamma 1 by gamma, this will be V1. We'll compare this V2 dash V2 dash को कंपेयर करेंगे, V2 dash equal to P1 by P2. P1 by P2 we can write it as V2 by V1. V2 V2 ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बिकम V2 into 1 minus 1 by gamma V2 dash, थोड़ा सिंबल्स मैं अलग ले लेता हूँ, दिस V0 समथिंग और V3 ले लेता हूँ, मेरे थोड़ा इजी हो जाएगा। V3 V2 कंपेयर करेंगे, fine. So V2 by V1 will be P1 by P2 will be V2 by V1. Okay, this a wala V3 V2 we have to compare. 1 by 1 minus gamma 1 by 1 minus gamma 1. Now V3 is it greater than V2 or less than V2? Gamma to definitely like a will be 5 by 3 greater than 1. Gamma will be greater than 1. Then if you compare here, V3 will be mathematically less than V2. Sorry, V3 will be greater than V2. So therefore the volume decrease is more in an isotomal process than in an adiabatic process. Volume decrease V2 के बारे में पूछा, वॉल्यूम डिक्रीज पूछ रहा है, और एक काम करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज डेल्टा V is asking V2 minus V1. This should be equal to P2 by P1 minus 1 into V1. Next, V3 minus V1. V3 minus V1 will be P1 by P2. This will be P1 by P2. P1 by P2 into V1. So this will be greater than this. V2 minus V1 will be greater than V3 minus V1. Because यहाँ पे power है ना. There's something mass. So even this also true statement. Both are true. ग्राफ में भी कर सकते हैं हम, ग्राफ में भी. So graph will be like this. This isothermal, this adiabatic. Then for given
for increase in pressure, इक्वल चेंज कर लो, देन उसका करस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे नोटिस कर लो. So V2 minus V1 will be greater than V3 minus V1. Graphically also you can do it. Next question ले लेंगे. Based on the units and dimensions and mechanics, is asking almost torque, Young's modulus, constant, gravitational constant. जो भी mechanics में जितना भी constant है उनके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे. Young's modulus का तो unit pressure है Newton per meter square. Force per unit area N L1 T minus 2 by L square. इसका तो M L minus 1 T minus 2. टॉर्क का तो फोर्स M L1 T minus 2 L1. Quotient of viscosity F equal to 6 pi eta RV. A formula, इससे a formula ले लो, it will be very easy for you. Quotient of viscosity will be F by 6 pi RV. F का तो M1 L1 T minus 2 by L1 L1 T minus 1. M L1 T minus 1. Quotient of viscosity. Gravitational constant F equal to Gm1 Gm square M naught square into R square. G equal to FR square by M square. इसका तो M1 L1 T minus 2 पोस्ट का डिस्टेंस का L square और मास M square, this will be M square. So total this will be इसका डायमेंशन रख देंगे M minus 1 L cube T minus 2. ग्रेविटेशन का तो ये हुआ, कोशेंट ऑफ विस्कोसिटी को ये हुआ, टॉर्क ए वाला है और यंग्स मॉडुलस ए वाला है. पहले एक काम करेंगे, यंग्स मॉडुलस M1L minus M1L minus 1 T2. Then torque M1 L square T minus 2. Quotient of viscosity M L minus 1 L minus 1 तो L minus 1 T minus 1. बाकी बचे सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो भी है दिस वन. So we'll pick up option A. And आप देखिए कि यूनिट्स एंड डायमेंशन दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. पेपर थोड़ा हाईली बैलेंस है. एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चन और बाकी बचे सो चैप्टर नो क्वेश्चन. कैपेसिटर नो दो क्वेश्चन ही इस पेपर में दो क्वेश्चन है. The capacitor C1 equal to 6 microfarad is charged with a cell EMF iot is disconnected and connected another with which is initial. Find the final charges. पहले एक capacitor है. It is connected to cell. EMF of cell 5 volt. Capacitance कितना 6 microfarad. Micro बाद में will introduce. Calculations will become easier. इसका initial charge कितना होगा Q0 minus Q0. Q0 equal to
C1 into E, 6 into 5, 30 coulombs. Now इस कैपेसिटर को हम एक काम करेंगे, Q naught minus Q naught, which is initially neutral. Capacitor C2 is neutral है, A वाला तो neutral capacitor है. Charge redistribution का concept है. Then after connection is asking the final charges on C1 and C2. Okay, charge of these two plates is conserved. कौन सा भी pair of plates ले लो, I'm just choosing this positive plates. Charge should be conserved. यहाँ पे equation Q naught equal to Q1 plus Q2. Q naught का वैल्यू कितना है? 30. 30 equal to Q1 plus Q2. Then potentials will be same. They are at same potential. Potential of X equal to Y. Or Vx equal to Va, Vy equal to Vb. So Vxy equal to Vab. So Vxy कितना? Q1 by 6, Q2 by 12. 30 equal to Q1. Q2 will be 2Q1. Q1 10 coulomb. Q2 का वैल्यू कितना? 20 coulomb. This will be your answer. The problem is based on capacitors. Charge redistribution when charge capacitor connected to uncharged or connected to with negative polarity. बहुत सारे questions ये सभी पहले पूछ चुके. The same thing again in April, again they'll repeat. इसको एक बार रिवाइज कर लो सभी. Semiconductor, the problem is based on semiconductor physics. Logic gates, subtopic name logic gates. यहाँ पे हमें we have to identify the gate. थोड़ा circuit बड़ा कर लेंगे. No. We have to bring the equations. This will be A B complement हुआ. A वाला B, this will come A complement. This will be a complement. A तो AND gate है. This one is AND gate. This also AND gate. A जो AND gate है, so the output will be AB complement. This is AND gate. इसका output होगा A complement B. A वाला तो OR gate हो चुका है. OR gate, AND gate, AND gate. इसका आउटपुट x लेंगे, y लेंगे. This will become xy, x dot y, pq, some other symbols. Already y यहाँ पे है. p dot q and p is ab complement dot a वाला a complement b. ये तो और है ना, sorry और gate. I think will satisfy this truth table. When both are 0, will be 0. When both are 1, will be 0. When 0, 1 will be 1, 1, 0, 1. Exclusive OR, it is a exclusive OR. What is this gate?
Next question. Paper moderator. Rather than saying easy, let me use one moderator. If two spherical surfaces of radii are having common center, if the object is present, find the distance between the first images formed by both the surface. So this is about the problem about refraction at spherical surface. थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको वो एक फॉर्मूला याद रहे तो यू कैन मैनेज दिस वेरी इजीली. बिना फॉर्मूला आप नॉट पॉसिबल टू वर्कआउट. कहाँ पे ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस r by 2 and what is the radii of each surface is r. Very nice question, just based on the formula again. Object is here, so this will be r by 2. थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेंगे. You can see this. So यहाँ पे this one first the ray will be incident on this, will undergo refraction, will form image here. Similarly, the ray will be incident on this surface, will form image somewhere here. Distance between the first images formed. Okay, this will be I1. This will be I2. What all the distances will measure from here? X1, and this will be 2R. And this is X2. Okay, first surface P2 का ले, this is P2, this P1. At P1 ले लेंगे. At P1 कहाँ पे refracted ray तो यहाँ पे है. इसका एरो ट्रिपल एरो दे देंगे. हम इसको I2 बना लेंगे. I1 A वाला होगा P1, P2, this will be X2, this X1. पहले refraction at spherical surface at P1. The ray will come, will undergo refraction, will bend. पता नहीं, so just will assume like this. Then where the refractor is present in the medium of refractance 1.5, this is there. So this will be 1.5 minus 1.5. P1 I1 1, P1 O. I'll write formula, then we'll substitute. By this will be P1C. Towards right is positive. Convention here towards right is positive. Now substitute the value where the refracted is present. What is the formula? Refractedness of medium where refracted is present by image distance minus refractedness of the medium where incident is present by object distance. Then mu minus 1 by P1C. P1C is radius of curvature. This everything will be 1.5. P1 I1. P1O. P1O will be minus R by 2 equal to P1C will be minus R. 3 by 2 P1 I1 plus 2 by R minus 1 by 2R. Minus 1 by 2R minus 2 by R. 3 by P1 I1 equal to minus, this will be 5 by R. Two denominator में LHS RHS cancel हो जाएगा. So this will be 3R by 5. So P1 I1 equal to minus 3R by 5. What do you mean by negative sign? It will be on the left hand side. Similarly, we'll write the refractiveness for P2. At P2, towards left will be positive. So refracted ray, directly let me write the formula. Time not there. P2 I2
incident ray is present in A, P2O 1.5 minus 1 minus R, or P1C, P2C. So 3 by 2. P2O, P2O will be 3R by 2 minus 3R by 2 minus 2R. P2C will be R, so minus 2R. Three by 2 P2I2. Let's a bit calculations. ये वाला तो 3 minus 7 by 6R. P2I2 will be minus 9R by 7. Now we got the value. और सर यहाँ पे नेगेटिव साइन आप क्या जस्टिफाई करते हैं? Okay, now I think completely visible. Yeah, fine. So what is actually happening? The ray will go here. Instead of bending, it will bend slightly and it will form image here. Similarly, this ray will go here. It will not bend more, it will bend slightly. And it will form image here. He's asking the separation between them. So we'll have the rough diagram. P1, P2 to P2 is this one, P1. Minus 3R by 5. From P1, it is minus 3R by 5. This is point C, center R. P2 will be 9R by 7. This will be minus 3R by 5. R by 5, and this will be 9R by 7. Is asking to get the distance. Now total distance, how much it will be? This is R. This R. So P1 plus P2 should be equal to 9R by 7 plus X, 3R by 5. This should be equal to 2R. इसको solve करेंगे, then we'll get this answer. A little bit lengthy, huh? It's lengthy. Question is lengthy. We'll take the next one. Again, see, ray optics. There's a problem with this paper, huh? Like same topic, two questions. Just now ray optics refracts spherical surface. Again, the same refraction spherical on lens. The focal length of the parts are mentioned L1 and L2. If you divide the focal length, this will become, no, there's a length is there. Huh? Its focal length is F. When you cut like this focal length will become F, 2F, 2F. Its focal length will remain same. जब आप कट करोगे like this, इसका फोकल लेंथ डबल हो जाएगा. नो अगर आप इसको इस तरह कट करोगे, focal length will not change because radii will not change, mu will not change.
Then he's asking, so 1 by 2. If you cut normal to the axis, and there's a cutting axis. If it is cut normal to the axis, focal length will get double. If you cut parallel to axis, focal length will not get doubled. Next question. Solenoid is asking about directly the solenoid. A solenoid of radius carrying current and having total turns magnetic field inside the solenoid. Find the length of solenoid. What is solenoid? Solenoid to like a spring only. It will have a number of turns. The physical length is L. Radius, number of turns, and magnetic field inside the solenoid mu naught Ni. Magnetic field यहाँ पे इस तरह रहता है. The magnetic field will be this will be magnetic field. So what is small n? Small n be number of turns per unit length. तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बी वैल्यू पता है हमें. म्यू नॉट का वैल्यू तो 4 पाई. So b का वैल्यू 2.9 into 10 to power of -4. Mu naught will be 4 pi into 10 to power of -7. Number of turns 200. Length we have to find out. Current कितना flow रहा है 0.29. Solve for length, we'll get the required answer 8 pi centimeter. लेंथ विल बी इन मीटर, उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है. थर्ड क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे. रे ऑप्टिक्स based on the length. If refractive index of the lens is 1.5 in air, जब a lens is in air, इसका refractive index कितना है 1.5. इसी लेंस को will immerse in liquid. What is the liquid? Liquid का focal length. Its focal length in air is 24 centimeters. डेटा गलत लिख चुका हूँ. I'll correct it. This is about the liquid. Then this focal length is 24 centimeters. Refractive index of lens कितना 1.5. Liquid का कितना है 1.33. Find its focal length. हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है. न्यू फोकल लेंथ, इसका न्यू फोकल लेंथ कितना है. यहाँ पे हमें रेडिया पता नहीं. तो 1/f1 equal to mu g by 1 minus 1 by r minus 1 by r. 1/f1 24 1.51 2 by. जब हम लिक्विड में इंसर्ट करेंगे, इसका फोकल लेंथ पूछ रहे हैं. mu g by 1 by r mu L is 1.33 by 2 by r. ये दोनों इक्वेशंस डिवाइड करेंगे. ए वाला और दिस वन, दूसरा ए वाला. When we divide these two,
F2 by 24, 1.5 by 1.33 minus 1 whole divided by 1.5 minus 1. Solving this, we'll get F2 96 centimeter. Okay, fine. Little bit easier. Lens maker formula. Agar yaad rahe to it'll be very easier for you. Next one. Three identical particles move under the action of mutual gravitational attractive force. एक triangle draw कर लेता हूँ. It'll be easy for me to explain. Yeah. Initially, they are on the vertices. Particle कहाँ पे है? These are the particles. And our speed we directed towards the adjacent particle. इसका speed इस तरफ direction है. It's directed like this. Its speed. Triangle of side A. ये वाला थोड़ा काम आ जाएगा हमें. A by 2, A by 2. Then find net angular to both center just before collision. What do you mean by just before collision? What is the net force, net torque about point 2? Will be 0. The net torque will be 0. Since the net torque is 0, so therefore we can conserve the angular momentum. यहाँ पे force of attraction इस तरह होता है. F, 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 ये वाला F, and this is F. What is the net torque about point 2? There's a net torque about point 2 is 0, so we can conserve angular momentum about any point, about point 2 at any time. Before collision, अब there's the initial age. जब एक collide हो रहा है तो जब एक collide हो रहा है तभी like how they move, actually they move like this. When they're colliding also, what is angular momentum? They'll have same angular momentum at any time t also. And there's a basic idea. Of the particles यहाँ पे इस तरह move होता है, move होते हैं curved path sum, because all the time their velocity should be directed towards adjacent particle. थोड़ा relative velocity में तीन particles, अगर तीन particle एक vertices पे है जो velocity है, will be directed towards other particle all the time, then they'll meet at centroid. Based on that only they've asked it. So net torque is 0 at any time t. So therefore the angular momentum is conserved about 0.2 at any time t, remains constant. So we'll take the initial one. So this will be the total height of the triangle. पहले calculate करेंगे. 60 degrees. Sin 60. There's a height. ये थोड़ा मैं calculations में जरूरी है. There's a point 2. We need this h1. Okay, we need this h1. Okay, there's a velocity. So this is 60 degrees. This will be velocity. h1 or this is h2. So total h कितना sin 60 degree is equal to h by a by 2 sin 60 root 3 by 2 h by a by 2. H equal to root 3 a by 4. So h1 and h2, they'll be in the ratio of 1:2.
2:1 ना. H1 plus H2 equal to H. मुझे H1 चाहिए. This H1 needed. H1 will be 2H2. H2 equal to H1 by 2. H2 equal to H1 by 2. H1 equal to 2H by 3. H का value कितना? √3a by 4. So this will become √3a by 2. यहाँ पे angular momentum will consider about 0.2 of the particle. Angular momentum of particle will be no. What is the angular momentum? हर एक particle का it'll be same about 0.2. All the particles will have same angular momentum. There are two components will be there. One V perpendicular, other will be V parallel. For all the particles, the conditions will be same. यहाँ पे like एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. इसका वेलोसिटी V perpendicular, V parallel. इसका वेलोसिटी V perpendicular और एक पैरेलल कंपोनेंट. यहाँ पे भी V perpendicular, V parallel. यहाँ पे देख लो नो. तो ड्यू टू V पैरेलल तो 0 0 होगा. देन इसके लिए हमें क्या चाहिए? H1 A वाला भी H1, A वाला भी H1. V perpendicular, for that this is 60 degree. तो V perpendicular कितना हुआ? V cos 60 degree, V by 2. So angular momentum हर एक का particle same रहेगा. So therefore it will be 3 times of m V perpendicular into H1. V perpendicular will be V by 2, √3a by 2. So this will become 3 √3 mVA by 4. Somewhere मेरा calculations गलत है. कौन सा भी options नहीं है ना. I'll check the calculation. Okay, kids, some corrections I'll make it. Sin 60 will be H by A. Will be A by 2. ये तो okay fine. यहाँ पे V by 2. H1 equal to 2H by 3. A का then H value is √3 A by 2. यहाँ पे एक 2 है. So this will become A by √3. Then 3m V perpendicular. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे A by √3. तो A वाला तो √3 mVA by 2. जो सॉल्व करता है उसी को पता है like what is the difficulty. I am telling you this one, giving guidance very easy. ऐसे पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, 10 दिन में करो, 15 दिन में करो, 20 दिन में करो, सॉल्व करो. देन ईच एंड एवरीथिंग आपको कैलकुलेशन तो ये like दिस इज नेचुरल. बोलने में क्या है एडवाइस? दिन भर बोल सकते हैं हम. प्रॉब्लम करो तभी पता चलता है व्हाट इज द फिजिक्स. माय एक्सपीरियंस. ओके फाइन, अगला वाला लेंगे. Next question: a physical quantity is given as the percentage in A, B, C, D. Okay, then delta Q by Q. This is a simple delta A by A plus or minus 4 delta B by B plus or minus delta C by C plus or minus delta D by D.
ए में एरर कितना है? 2%। बी का एरर 1%। सी का एरर 2%। डी का एरर 1%। तो टोटल कुल मिला के दिस विल बी 9%। सिंपल वन। नेक्स्ट वन विल टेक द एक सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर इज अ कांस्टेंट। सर्कुलर प्लेट, यहाँ पे जो कैपेसिटर है इससे लेके सर्कुलर प्लेट वन मेड अप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट करंट, कितना करंट फ्लो रहा है? आई। कैपेसिटर्स एंड EM waves. The subtopic is find the distance between two circular plates. The potential of the capacitor, potential of capacitor. The potential of capacitor varies as find the distance between two circular plates of capacitor. तो यहाँ तो चार्ज Q minus Q. We know Q equal to CV. dQ by dt equal to C into dV by dt. तो dQ by dt कितना? 0.15. ये वाला तो C है. dV by dt 7 into 10 to the power of 8. So C will be 0.15 by 7 into 10 to the power of minus 8. So 15 by 7 into 10 to the power of minus 8. डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पूछ रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट, इसका तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम. दिस विल बी 10 टू पावर ऑफ माइनस 8. फर्दर एफ नॉट का वैल्यू, एफ नॉट वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 12. डिस्टेंस डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना? 10 centimeter, 0.1 whole square, 15 by 7 into 10 to the power of minus 8. Solve for D, will get the answer. या तो रियली कैलकुलेशन देखो कितना है, लाइक 2 minutes करना रियली वेरी बिग इश्यू. हाई स्पीड कैलकुलेशंस नीडेड. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नॉट पॉसिबल. एवरीथिंग कम बाय प्रैक्टिस. मेंस का एवरीथिंग इज कम बाय प्रैक्टिस. 10 days में, 15 days में, 15 दिन में, 20 दिन में बहुत सारे एडवाइजर्स मिलते हैं आपको. ओके, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस. क्या तो सुनो तुम, क्या तो करो. बिना मेहनत के तुम फल भुगतना चाहते हो, नॉट पॉसिबल. हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस करना पड़ता है. नेक्स्ट वन. आई डोंट वांट टू, यहाँ पे मैं सपने दिखाना, I don't want to make you dream. One simple thing, जाके पढ़ो बस. एवरीथिंग आप अपने आप को, आपको रिजल्ट आ जाएगा. बिना पढ़े आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन दैट्स अ रियली प्रॉब्लमेटिक, नॉट पॉसिबल. हार्डवर्क करो, देन ऑटोमेटिक अपने आप रिजल्ट आ जाएगा. तुम किसी का इंस्पिरेशन, किसी का help, किसी नथिंग नीडेड. 3 blocks of same mass set in motion as shown, all collisions are elastic. यहाँ पे हमें after all collision velocity of A and B, first A and B will collide. Same mass, elastic collision, they'll exchange velocities. I'll decrease the diagram, size of the diagram. First they'll collide. First A and B will collide. यहाँ पे भी out place.
First, A and B will collide, they'll exchange velocity. After collision, A का velocity 2 मीटर होगा, B का velocity 5 मीटर होगा, then C का तो velocity 4 मीटर है. बाद में A का velocity as usual 2, B and C will collide, exchange of velocity will occur. A वाला 4 होगा, this C will become 5. After all collision, velocity of A, B, C are 2, 4, 2, 4, 5 should be. यहाँ पे तो 4 to 5 है, so this is a wrong statement. Velocity get interchange in elastic collisions of block of same mass. I think this is a correct statement. So statement 1 is false, statement 2 is true. The topic based on the collisions, conservation of linear momentum. This is a green color. यहाँ पे थोड़ा collisions का idea यहाँ पे use करना है तुमको. In elastic collision, there will be exchange of velocities of say between same masses. Next one, an electromagnetic wave propagates in x direction, then electric field and magnetic field are directed along YZ direction. The wave is propagating along. This will be E bar, this will be B bar. E cross B, the direction of this is given by E cross B. Basic definition, problem based on EM waves. Because if the wave is propagating along x-axis, the direction of electric and magnetic field should be along y and z axis. We'll take the next question. The graph is shown for 1 mole of ideal gas. 1 mole of ideal gas. Ideal gas. PV graph is shown for 1 mole of ideal gas. Find the total heat supplied to the system. No heat exchange in adiabatic process. Only heat is absorbed in the isothermal process. So Q adiabatic will be 0. Total heat supplied, I'll write like this. Total heat absorbed is equal to adiabatic plus isothermal. In adiabatic process 0. In isothermal process nRT log of final volume 18 to 10 to the power of minus 3 by 16 to 10 to the power of minus 3. 1 mole, 1 R का value R, temperature T, log of 8 by 6, 8 by 6 to this will become 4 by 3. This will be your option. No heat will be absorbed in the adiabatic process and heat will be absorbed in the isothermal process. Last paper, my burden also will come down there क्योंकि my college में so like I had to work 9 hours. बाद में आके paper करना थोड़ा little bit stressful. If sand falls in a conveyor belt moving with a speed v such that dm by dt root v, find how the power required to keep the speed of belt constant. यहाँ पे हम एक belt ले लेंगे. This is a conveyor belt. Conveyor belt is moving with a speed v. इसके ऊपर sand डाल देंगे. तो dm by dt कितना? dm by dt root v is telling. Then we have to calculate the force. Find how the power required to keep. पहले force calculate करेंगे. F should be equal to v into dm by dt. V. So dm by dt is proportional to root v. So this will become v into v to power of 1 by 2, v into 3 by 2. Power equal to F into v.
V to power of 5 by 2. Power means force into velocity. बिना डायग्राम भी आप like you have to think in this way. हर एक का क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ करना in exam not necessity. Variable mass concept, collisions, after collision last topic, conservation of momentum, variable mass concept, rocket propulsion. We are adding mass to the system. We are adding mass to the system. So therefore now the thrust force will be in this direction. यहाँ पे हम external force इस तरह लगा देंगे. Mass is added to system, no? So the thrust force will get added up. Velocity of mass with respect to system. Velocity of mass 0. Velocity VMS will be towards left. So thrust force on the belt like this. External force we have to apply. So therefore now we have to apply even the power also. That's what he is asking. Find the external power. Next question. A cup of coffee takes a time. I think this is based on the Newton's laws of cooling. I'll try to avoid, not part of syllabus. JEE NTA clearly mentioned Newton's laws of cooling, removed, and again is asking. JEE Advanced is there. JEE Mains not there. Out of syllabus. This should be a bonus. I'll try to avoid why to trouble everyone discussing paper. Oh, कितना बड़ा है ना question. Yeah. A dipole is placed such that its axis is perpendicular to an infinite charge sheet. यहाँ पे dipole है. There's a dipole is placed such that its axis is perpendicular to infinite. A वाला charge sheet है. Net torque, net force 0. So what is the direction of electric field produced by this? It will produce E bar in this direction. What is the formula for net torque? Net torque is equal to P bar cross E. So PE sin theta. यहाँ पे theta 0. So net torque will be 0. Net force is along negative x-axis. No. Net force will be 0, no? Because field produced by E bar will be uniform. And so what is the field produced by the, it will be uniform electric field it will produce. And the net force on the dipole will be 0, no? ये वाला dipole है. अगर यहाँ पे electric field इस तरह है, what is the net force on it? F plus F minus. And दोनों equal हो जाएंगे. ये green color जो lines में डाल रहा हूँ, this is the electric field. So net force will be 0. So this is a wrong statement. Net torque 0 and potential G का formula U equal to minus P bar dot E bar minus PE cos 0. Stable equilibrium. Correction. Net torque, net force 0. Correct statement. Torque net and both are maximum. Wrong statement. Option 2 pick up कर लेंगे. Good question. Electric dipole. Choose the correct option. Stopping potential is equal to K max. Okay, काम करेंगे. K max equal to SC by lambda minus what function? What is K max? K max equal to E into Vs. So therefore we can write it now. So what is the stopping potential? Equal to K max by E. This will be our basic or option.
Problem based on photoelectric effect. Then stopping potential increases if intensity of the incident beam increases. No, wrong statement. Intensity of incident decreases. If wavelength of the incident beam, stopping potential increases. If wavelength of the beam decreases, so this is also wrong statement. Stopping potential will increase if lambda decreases. Lambda increases means this will decrease. So this is also wrong. Photoelectric effect, just basic theory. Find the number of spectral lines formed in a sample of hydrogen atom in which highest orbit of electron is 4. कितना spectral lines? Highest orbit of electrons is 4. So यहाँ पे n equal to 1, 2, 3, 4. कितना ट्रांजिशंस यहाँ पे हमें मिलेंगे? एक तो 4 to 1, 4 to 2, 4 to 3, 3 to 2, 3 to 1. बाद में 1 to 2. कितना स्पेक्ट्रल लाइंस? 6 स्पेक्ट्रल लाइंस. Hydrogen atom, if it d excites from n equal to 4 to 1, sample is telling. Sample means बहुत सारे atoms रहेंगे, एक ही atom नहीं, बहुत सारे atoms. कुछ atoms make transition from 4 to 1, कुछ atoms ऐसे transition करेंगे 4 to 3, बाद में 3 to 2, बाद में 2 to 1. कुछ atoms 4 to 3 and 3 to 1. कुछ atoms 4 to 2 and बाद में 2 to 1. कुछ atoms like 4 to 3 then directly 3 to 1. और कुछ atoms 3 to 2, 2 to 1. तो इस सैंपल में कितना वेवलेंथ्स हमें डिफरेंट तरह का वेवलेंथ्स, अलग अलग वेवलेंथ्स मिलेंगे? 6 वेवलेंथ्स. सो इसके 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं हम. ओके, दिस वन, दिस अबाउट द. ओके, ये तो 29 जनवरी सेकेंड शिफ्ट, द लास्ट पेपर. It was very easy, moderate paper, formula based. So you can see that one. So जो भी like again you are preparing for April shift, what is the method is read teacher notes for April session for JEE Mains 25 April session. Read teacher notes many times. इससे आपको concept clarity. With this you will get concept clarity. Revise and memorize formulas. Everything is formula based. Then third one, solve PYQ. Solve last 5 years PYQ. Avoid most important PYQs. Not needed. जो भी क्वेश्चन आता है इट्स इम्पोर्टेंट. उसमें से आप इंपॉर्टेंट नहीं निकाल सकते. जो भी क्वेश्चन हो, इजी या टफ हो, कौन सा भी, जो भी PYQ में इट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स ऑल. सो देन डोंट डेंजरस लाइक कुछ PYQ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देन इम्बैलेंस प्रिपरेशन हो जाएगा. दिस इज वन थिंग. नेक्स्ट अगेन बाद में मैजिक मेथड्स. बहुत सारे मैजिशियंस हैं यहाँ पे. I don't want to tell their name, like they tell like avoid the magicians and their magical methods. 15 दिन में, 20 दिन में, 16 दिन में, तुक्का मेथड, पुट्टा मेथड, नथिंग विल हेल्प यू. जब तक आप पढ़ोगे नहीं, नॉट पॉसिबल.
Please it's your life. यहाँ पे not entertainment. It's all about your life, career. Take it very serious. जितना होता है उतना पढ़ लो. अप्रैल जो भी हो चुका है finish okay, no problem. Start reading. Okay, thank you all of you. And what is the JEE Advanced course? What is the thing? In next video I'll upload it. Okay, thank you all of you. Thanks for great support. Okay, kids, 29th January evening shift का paper discussion complete कर चुके हम. Paper was formula based. यहाँ पे आप देखिए आपको जितना formulas है around 18 questions को अगर आपके पास formula रहे तो you can manage like this. तो बिना formula not possible. And थोड़ा बहुत concept जो भी पढ़ चुके उसको अगर याद रहे तो really very easy all these things. तो जब तक टीचर नोट्स है वो उसको बार बार पढ़ लो यार. सो देयर इज नो नीड टू गो फॉर समबडीज नोट्स. कोई 5 शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, 10 लाइंस नोट्स, 20 लाइंस नोट्स, कुछ भी फायदा नहीं है. आपके पास आपका टीचर नोट्स है, आपका फॉर्मूला नोट्स है, फॉर्मूला बुक आप बना चुके होंगे, डेली रिवाइज करो. दिस इज द स्ट्रेंथ. देन जो भी मेथड्स आपको है ना, नथिंग इज यूजफुल. आप तो एक्सपेरिमेंट कर चुके 10 दिन में, 20 दिन में, 14 दिन में, 30 दिन में, 50 days, 90 days, this method, that method, this method. No, not possible. जब तक आप पढ़ोगे नहीं, nothing is useful. So that magics and magicians or magical methods थोड़ा सोचिए. Don't waste your career. तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा. पढ़ने से ही रैंक आ जाएगा. बाकी जो भी है ऑल आर नो यूज. स्टार्ट रीडिंग एंड रिवाइज फॉर्मूला, सॉल्व पीवाईक्यू. सिंपल स्ट्रेटजी. जब तक पढ़ोगे नहीं आएगा. सर मैंने बोलते सर एडवाइस, क्या एडवाइस देना है जब तक तुम नहीं पढ़ोगे? बिना पढ़ोगे तुम कितना भी एडवाइस सुन लो, नो यूज. अब जब तक आप नहीं पढ़ोगे, कौन सा भी मेथड अप्लाई कर लो, कौन सा भी स्ट्रेटजी अप्लाई करो, nothing will work out. So no strategies, nothing is there. Just plain reading, revising formulas, solve PYQ. Everything will set right. Paper, let it be easy, tough, moderate, lengthy, highly calculation, you can manage. Okay, fine, bacho. So you have to fight back. Okay, all the best for April session. Thank you very much.